Okay, let's do some more concept-oriented questions. Okay, so this is differential equations. Ncert exemplar practice session. All right. The order of first one. कोई डाउट? No, sir. लिखते जाओ आंसर. Keep writing the answers. पूछ सकते हो अगर कोई डाउट हो तो पहले में. First one is clear. Okay. A is the only arbitrary constant. But when you answer in paper, you will have to explain A is the arbitrary constant, single arbitrary constant, order is 1. One arbitrary constant and hence the order is 1. Okay. This will not get you marks. Be very careful. भैया आपके पास चेन थे, इसको चेन
मेरा पर्स यहाँ पड़ा हुआ है। कितने चाहिए? उसको देना है 900। ये कितने? 500। राघव क्या कर रहा है? ये 300 है। राघव से मांग ले 100 रुपये। Oh, it is not defined? रीजन नहीं पॉलिनोमियल लिखा? नहीं है। हाँ पॉलिनोमियल नहीं है। यार, पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कोई tan नहीं है। पॉलिनोमियल में पावर्स तो अलाउड होती हैं भाई, वही तो डिग्री होती है। अच्छा हाँ। यस। 2। आई थिंक यू हैड मेंशन्ड दिस अर्लियर कि किसका लेना होता है, राइट? डिग्री हम्म हम्म। जिसका ऑर्डर होता है हाईएस्ट, उसी की डिग्री लेनी होती है। सो यू वर राइट। ठीक है। आई टोल्ड यू कि टेक द डिग्री ऑफ एनीवन। हम्म। नो, बट टेक द डिग्री ऑफ द वन विद द हाईएस्ट ऑर्डर। ओके। सो यू वर राइट। पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढो, हम्म। उसकी डिग्री लो। ठीक है। यस। फोर्थ इज लैम्डा से करना है ना हमें तो। हम्म। वी विल पुट लैम्डा एक्स एंड सी लैम्डा 0 कितना आता है, या लैम्डा 2 आता है, तो जस्ट पुट।
कितना आया? कर रहा हूँ अच्छा, कुछ। कट गया सारा, 0. 0 आंसर। I think if your concept gets stronger and stronger by smaller questions, यस सर। फिर भूल लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं. Okay. Next question is on what topic? होमोजेनियस। Yes. Correct. बढ़िया. I think it's same thing getting repeated 100 times. यस सर। Integrating factor. Okay. Fairly straightforward ones. कुछ खास करने को नहीं है. More definition centric.
Okay. It is x dy. Okay. No. Minus 1 by x. E raised to power minus 1 by x हो गया ना? हाँ p. यस सर ठीक है. ये क्या लिखा हुआ है? देखिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक मिनट. अच्छा एक मिनट. So you brought the y here. ई टू दी पावर चले जाएगा तो हाँ, वो कहाँ पे है? वो मैंने मतलब मन में ही कर लिया तो Okay. अच्छा so it became e raised to power. माइनस लॉग एक्स बन जाएगा. अच्छा तो उसको वो बना दिया माइनस एक्स. यस तो ये 1 अपॉन क्यों है ये? ये नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ना हमें. तो वाई इज आंसर 1. एक मिनट. सो ई रेस्ट यू हैव डन ई रेस्ट टू पावर माइनस लॉग एक्स राइट. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ई रेस्ट तो 1 अपॉन. अच्छा 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स. ठीक है गॉट इट. ओके मेक सेंस. Next is find the general solution of dy by dx is equal to ex plus y. Okay, I think this is ये तो वेरिएबल सेपरेशन है. ठीक है हो गया. बढ़िया. ठीक है मेक सेंस. ओके नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं. गो टू नेक्स्ट पेज. Try this one. So make a differential equation.
What is a method you will adopt? Can you explain? डेरिवेटिव ले रहा हूँ। Okay. But that is not the only method. एक पूरा method क्या है? Derivative is correct. But method क्या है ये करने का? What is a method? तो आपको बनानी है differential equation, right? So the method is you have to take derivative till the time A and B get eliminated. जब तक A और B eliminate नहीं हो जाते तब तक derivative लेते रहो. अच्छा, ओके। Got it? So you have to take successive. If you take a single derivative which you're doing, if you see what will happen, B will go, बी एलिमिनेट हो गया। है ना? एक, but A तो नहीं जाएगा. नहीं, No. So you have to take derivative till the time you're getting rid of as many जितने भी arbitrary constants हैं वो सारे eliminate करने हैं आपको. यस सर। ठीक है? Okay. See, the derivative of sine inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. And the derivative of cos inverse is minus 1 upon. ओके, Same, but minus 1 upon. We will do trigonometric, inverse trigonometry after this so that you gain some knowledge on inverse trigonometry. फिर समझ में आएगा ये डेरिवेटिव. यस सर। So अब the rule is clear to you. तब तक डेरिवेटिव लेते जाएंगे जब तक ये एलिमिनेट ना हो जाए. यस सर।
अच्छा, इसका डेरिवेटिव आ गया, इसका भी आ गया, राइट। और हाँ ये अच्छा, सो यू आर आइसोलेटिंग ए। हाँ हो गया अब तो ये हो गया। भाई इसमें तो बड़ा डेडली हो जाएगा, ये तो चेन रूल लग जाएगा, एक इसका डेरिवेटिव होगा फिर इसका होगा। दिस अच्छा। इज यू इंटू वी ना, हम्म। यू इंटू वी हो गया ना, तो इसका डेरिवेटिव अपना आएगा। यस सर। वो वाला अच्छा पार्ट ठीक चाहिए है। अब, दैट हैज टू बी एडेड। So rule is eliminate your arbitrary constants. तब तक डेरिवेटिव लेते रहो जब तक आर्बिट्री कांस्टेंट हट नहीं जाता। तो इसमें यूवी लगा दो कि कोई इजियर मेथड यूज करो। और कोई मेथड कौन सा है? द ओनली थिंग यू नीड टू डू, इफ यू नो द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव इज 1/1 - x² अंडर रूट, हम्म। और 2x भी आ गया एक्स्ट्रा यस सर। क्योंकि ये है इंटू dy/dx। ठीक है यही कर देते हैं। दैट्स ऑल।
डन. Yes, sir. नेक्स्ट नीचे. Hmm. Do you know anyone who does HTML tagging website? No, sir. ओह, नाइस वन. ये वाई बन गया वापस. Yes, sir. 4y. Hmm. गुड वन.
You will need to learn two things. One, inverse trigonometry. The other is coordinate geometry. Okay. I'll tell you the reason. क्योंकि वो questions जो देंगे ना कई बार, उसमें they will not give you equations. They will give you word problems, or you will have to first write the equation of that plane, line, circle, parabola, ellipse. दिया नहीं होगा तो ऐसे लिख देंगे ये ऐसा है. So you will get stuck if you don't know enough coordinate geometry or inverse trigonometry. में तो I think you're a bit weak. It Yes, sir. doesn't take too much time. और करने की बात है start. ठीक है. Okay, but I think you have a good grip on differential equation. थोड़ा अब खुद भी करोगे तो काफी हाँ. बेटर हो जाएगा. I am ensuring कि there is no topic which is unheard, and you've practically covered most of the topics. Yes, sir. And the methods. I'm just seeing if something new, because exemplar काफी बड़ी होती है करने में. But ठीक है, उसमें you have so many MCQs. Just seeing if I see something which is new, innovative. The problem you're likely to have in this is if they give you a worded problem with coordinate geometry. So otherwise you will not run into a problem. Okay. You can see 11th standard चाहिए होती है 12th में. हाँ. You can get really stuck if you don't have strong base. वो करनी ही पड़ती है किसी भी, मतलब there is no choice you have. Let me show you a question. So somebody who has never done 11th standard and is clueless कि 11th standard क्या है. So let me show you a question they have given. Okay, and try this. So they have not given you the equation. They have said this is the equation of non-horizontal lines in a plane. Now you must know words are very big words, but obviously if you know coordinate geometry, it is nothing.
ये सर समझ नहीं आ रहा क्या। Which one? Okay. See, now I told you big words, right? If you see, this is nothing good. Let me just draw XY coordinate system. So this is your normal XY coordinate system. यस सर। Okay. So any line which you draw in this is a plane also, by the way. So I'm drawing a line in this. Okay. ठीक है। So this is my y axis and this is, तो ये जो plane है ये XY plane ही तो है। इसमें ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसकी जनरल इक्वेशन अगर थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड याद है, नॉट मच, इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू mx प्लस c, कुछ भी लिख सकते हैं। सो क्या ये हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसे होती है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो दिस इज अ इंक्लाइंड लाइन, राइट? इट्स एन इंक्लाइंड लाइन, तो ये इसकी इक्वेशन है। सो नाउ यू नो this is the equation or this is the equation. Yes sir. Slope is not equal to 0 because we need, so ये सारी लाइनें अगर मैं एक लाइन बनाई है मैंने, I can draw thousands of such infinite, ये बना ली, चलो कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो XY प्लेन में। समझ गया। तो अब now read the English very carefully. So in a plane तो ये अब लाइन की इक्वेशन आती थी, यस सर। लेकिन इंग्लिश दिख रही है इन अ प्लेन, तो ऐसे बंदे को बोले यार व्हाट, तो एक्स वाई इज अ प्लेन, यस सर। उसमें कोई भी लाइन ड्रॉ करो, अब इसका डेरिवेटिव लेना शुरू करो, आंसर। बट अगर ऐसा आ गया जिसमें इक्वेशन नहीं दी और वो लिख दिया, तो देन यू कैन सी यू आर गेटिंग स्टक। यस सर। बट इफ यू आर गुड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, देन इट इज वेरी सिंपल फॉर यू। ओके, ठीक है। Okay. So let me show you one more. But you may be able to do this. I'm going to the next page again. So let's go to the next page. Okay, so this is it. So now some knowledge of circle is required, which I did tell you is what?
No? No, sir. Okay. So if you remember, I told you it's a circle. Hmm. If it is centered on the origin, wait, लाइन टेढ़ी भी हो सकती है. Okay? So you can have this centered on a circle, Hmm. and then you write x square plus y square is equal to r square. But if the same circle is no longer centered but is centered somewhere here, for example, okay, Okay. and the coordinates are, मैं इसको थोड़ा दूर दिखा देता हूँ इससे. So let's say it is here. ये मान लो, right? The coordinates are known to us. The coordinates are of the center are a comma b. Hmm. If it is centered on circle, this is the right. Radius Yes, is sir. still the same, but the coordinates from 0 have shifted to a comma b. So it is x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square. जो ये होता है ना x माइनस a, जो सेंटर Hmm. का है, तो अगर सेंटर इज एट मान लो 1 2, सो यू विल राइट इट एज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ठीक है. Now you know the equation. Hmm. So since this is x and y, the radius can be any radius, right? Hmm. So you can have many concentric circles with center being the same. सबका सेंटर सेम हो सकता है, बट रेडियस Correct. अलग अलग हो सकते हैं, राइट? Hmm. So this equation, therefore, if r can vary, represents concentric circles. मैंने देखो एक ऊपर सर्कल और बना लिया, and I can draw one more, right? Yes, sir. So you can draw any number. So it becomes a system of concentric. A general equation is written that represents a lot of concentric circles, all centered at the same point. Now start taking derivative and eliminate the radius. ये पहले में ही हो जाएगा, Hmm. because this will become 2x minus 1. This will become 2y minus 2 into dy by dx equal to 0. Yes, sir. Answer. ठीक है. Right? So the derivative lena is no big deal, but I think the problem arises if you have to write the equation of the circle, which is very simple when you do coordinate geometry. मतलब basic है ये. Hmm. Coordinate geometry के अंदर there is nothing. Okay. Let me give you one more. Because if you know conic section, only then you will have clarity on this. So let's say this is your question, okay? Now, if you notice all the words he has used in the choices,
Solution is not problem, right? Solution you can do easily. Separation of variable. हाँ सॉल्यूशन है तो कोई दिक्कत नहीं है. But now you don't know what's a हम्म parabola and all that, right? पहले solve कर लो, then I will tell you what it is. So with this you will have some idea कि okay. So you can make it log c here so that अच्छा you've done that. Okay. ठीक है. So y is equal to cx. ये तो लाइन की इक्वेशन बन गई. यस सर हाँ Straight line passing through the origin आ गया. But anyway, if you talk about hyperbola, okay, वैसे तो देखो जब तक करोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा.
दिमाग में बैठता नहीं ना अगर प्रैक्टिस ना हो तो यू कांट. Yes, sir. Parabola, rectangular hyperbola is generally written very similar to ellipse but with a minus sign. Okay. So this is the way you draw. If this is a y-axis, this is your x-axis. So you can put the values. So it looks like this. This is called a rectangular hyperbola. Hmm. Okay. So this is called hyperbola. What is the second one you have? Parabola. Parabola, I think you know. Yeah. Physics में भी होता है. Okay. And then straight line, you know. Circle, you also know. Circle is x square plus y square is equal to r square. Straight line passing through the origin can be any line. Y is equal to mx. C नहीं होगा ना क्योंकि it passes through the Yes, origin. sir. Doesn't cut the. ठीक है. Now here is my suggestion. Keep doing the questions from Exemplar and I will send you the assignment also. Reasoning assertion, fill in the blanks. I think broadly कर लोगे. If you get stuck on a question on coordinate geometry, we can discuss. But मैं आपको करवाऊंगा coordinate geometry. ठीक? वो तो साफ नजर आ रहा है. It has to be done along with inverse trigonometry, which is another weakness. Yes. Because it becomes a stopper always, you know. Secant inverse, ये वो तो. ठीक है? Go ahead and practice. So I have to send you assignment of area under the curve, not the long ones, just small questions. Reasoning assertion और छोटे छोटे जो होते हैं. लंबे वाले तो काफी हैं exemplar में जो आपको पूरे करने हैं. और I have to send you the questions on differential equation. Yes, And sir. then I also need to send you questions on definite integration. Have I ever sent you anything on definite integration? I don't think so. नहीं. So 3 chapters I have to send you now. And please complete your Excel sheet as to where you are on physics and maths both ठीक है. in terms of completion. हम्म. ठीक है? क्योंकि वो ठीक है. एक टारगेट मिला हुआ है आपको करने के लिए. हाँ. That should keep you motivated कि मुझे ये तो खत्म करना ही है. Yes, sir. You get stuck, please check with me any doubts. Don't be shy. Don't be hesitant. Nobody is judging you. We are there to help you out. Yes, sir. दोबारा भी सीख सकते हैं टॉपिक. कोई जरूरी नहीं कि पहली बार नहीं है तो दोबारा भी सीख सकते हैं इसको. नो प्रॉब्लम. Yes, sir. ठीक है. Everybody gets stuck. You are not the only. I also get stuck. I also do mistakes, which is fine. ठीक है. ठीक है जी. चलो ठीक है, जी. sir. See you then. Bye bye. See you in the evening then. Take care. Yes, sir.